All right, a very warm welcome, namaste to all of you out there. My name is Ishani, मेरा नाम ईशानी है and I am a child and adolescent psychologist and a family therapist. So मैं बच्चों के साथ, adolescents के साथ, उनके parents के साथ और families के साथ काम करती हूँ and जितने भी बच्चे हैं on the special needs spectrum, मैं उनके साथ भी काम करती हूँ. So, आज we're all gathered to talk about something very, very interesting, which is turning family time in this lockdown into a retreat. तो हम सब के लिए एक ऐसा टाइम है जहाँ कोरोना वायरस की वजह से हम सब अपने घर में लॉकडाउन हैं एंड देयर इज सो मच दैट इज ओवरवेलमिंग अस. हमारे लिए काफ़ी मुश्किल है एंड आई थिंक स्पेशली एज पेरेंट्स हमारे लिए ऐसा टाइम है जहाँ हमारे बच्चे, हमारी फैमिली, हम सब एकजुट होके एक ही घर में हैं एंड सब लोग अपने डिफरेंट टाइमलाइंस में, अपने अपने डिफरेंट कामों में, अपने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस में और अपनी अपनी डिफरेंट वांट्स हैं सबकी. सो उस टाइम, ऐसे टाइम में जहाँ मेड्स भी नहीं हैं एंड really there is so much to do at home and your kids are around, आपके सारा टाइम आपके बच्चे हैं, they also want your attention, you want to do something for yourself. तो ये सब मिलके एक अच्छी सी खिचड़ी हमारे लिए पका रही है हमारे घर में हर रोज. तो उस टाइम जहाँ इतनी सारी चीजें एक साथ होनी, ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे कि ये सारी चीजें थोड़ी हमको उसका वेट कम लगने लगे. अभी शायद हम सबके कंधों पे वो वेट थोड़ा भारी लगता है, बट व्हाट इज इट दैट वी कैन डू टू कन्वर्ट दिस फैमिली लॉकडाउन इनटू अ रिट्रीट? So come along with me and hopefully we'll discover 7 simple तरीके, simple ways in which we can convert this difficult time into hopefully a retreatful time. एक खुशी का माहौल जो शायद हम अपने लिए, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, बाहर चाहे जैसी भी मुश्किलें, स्ट्रेसर्स हों, लेकिन एटलीस्ट घर में जब हम साथ हैं वो क्रिएट कर सकें. सो आर यू ऑल रेडी? टू बिगिन विद, सबसे पहली चीज, सबसे पहले नंबर पे आता है जो हम कर सकते हैं, दैट इज क्रिएट स्पेस. अपने लिए जगह बनाएं. तो जब हम स्पेस की बात करते हैं, इतना कुछ चल रहा है हमारे लिए, हमारे घर में बच्चे हैं, मम्मी पापा हैं, हस्बैंड हैं, शायद घर में और इन लॉज भी हैं. तो उस टाइम हर कोई एक दूसरे के साथ घुला मिला हुआ है. एवरीथिंग इज वेरी वेरी एनमेश्ड. एट दैट पॉइंट इन टाइम इट्स extremely important to create that space in your family, be it in your relationships where you all can create some space. ऐसी धाराएं जिससे कि हम अपने ही रिलेशनशिप्स को एक धागे की तरह पिरो सके, उसे एक ब्यूटीफुल फैब्रिक में बना सके. तो सबसे पहले स्पेस के लिए जहाँ तक हम बात करते हैं, हमारे घर से स्टार्ट करते हैं. कितनी चीज़ें हमारे घर में पड़ी होंगी जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है हमको. आई थिंक मोस्ट ऑफ अस आर बिग होल्डर्स. हम चीज़ें अपने घर में लाते हैं, भर देते हैं, हमारे बच्चों की चीज़ें, हमारी चीज़ें, हमारे मम्मी पापा की चीज़ें. तो उससे क्या होता है? उससे पूरी जगह भर जाती है and then there's so much all around us that it starts becoming very very overwhelming for us. So first thing first, सबसे पहले decluttering, सफाई. अपने लिए ऐसी एक जगह बनाएं, जितनी भी चीजें, स्टार्टिंग जो चीजें आपको नहीं चाहिए, आपके काम नहीं आ रही हैं, एक डब्बा उठाइए और उसमें वो सारी चीजें फटाफट डालिए. सोचिए, think about it. That space is not just occupying your house, but it's also occupying your mind. It's also occupying the energy around you. जो आपके तरफ, हमारे तरफ constant एक एनर्जी होती है. कई बारी जब हम बैठे होते हैं, हमको लगता है वाओ, वी आर फीलिंग सो पॉजिटिव, हम कितना खुश फील, हम कितना पॉजिटिव फील कर रहे हैं. और कई बारी हमको लगता है कि कुछ है ऐसा जो हमको कंफर्टेबल नहीं फील करा रहा, एंड होते हुए भी हमारे घर में वी डोंट फील एट होम. Sometimes it is this energy which is created by these spaces, all the things around us. They take our space. They kill the energy of the house. So सबसे पहले really try. And अभी तो we are not even busy in our daily lives, जहाँ हमारे पास टाइम नहीं होता. हम सब
सबका वो मन होता है, सबकी वो एस्पिरेशन होती है, आज मैं अपनी क्लोजेट क्लीन करूंगी, आज मैं ये सारी चीजें जो मुझे नहीं चाहिए उसको पक्का से हटाऊंगी. बट आई थिंक इवन व्हेन वी गॉट दैट टाइम, हाउ मेनी ऑफ अस हैव एक्चुअली डन दैट? हम में से कितने हैं जिन्होंने सच में वो स्पेस क्रिएट करी है? सो सबसे पहले स्टार्ट विद डीक्लटरिंग. जो चीज आपको नहीं चाहिए, throw it away in a box, keep it in a box that you don't need. Second of all, for your kids, हमारे बच्चों के पास कितने ऐसे टॉयज होते हैं, कितनी ऐसी चीजें होती हैं which our kids really don't use at this point in time, या वो बोर हो चुके हैं उससे. So be that secret Santa in your child's life. Pick all those things up जो आपका बच्चा नहीं यूज कर रहा, जो चीज आपका बच्चा नहीं यूज कर रहा, just pack them up. एंड इट बी बेटर अगर आप अपने बच्चे को भी आपके साथ घुल मिल सके वो, और एक फन एक्टिविटी की तरह क्रिएट हो सके. यू, योर चाइल्ड, और इफ योर हस्बैंड और योर फैमिली मेंबर्स वांट टू जॉइन इन, क्रिएट दिस एज अ फन एक्टिविटी. एक बहुत ही फन फील्ड रिक्रिएशनल एक्टिविटी जहाँ सब लोग अपनी चीजों को एक गेम की तरह बना सकते हैं, क्विज की तरह बना सकते हैं. जितनी भी पुरानी चीजें कौन सबसे पहले ढूंढ के उसको हाइड एंड सीक की तरह ढूंढ के लाएगा और अपने अपने बॉक्सेस में फटाफट फिल करेगा. डू दैट, योर चाइल्ड विल ऑल्सो फील अ पार्ट. ऐसा नहीं लगेगा बच्चे को कि उसकी सारी चीजें मम्मी ने उठा के कहीं फेंक दी है. एंड देन व्हेन टाइम कम्स, कितनी बारी हमारे बच्चे खेलते खेलते चीजों से बोर हो जाते हैं. सो देन व्हेन दोज थिंग्स आर केप्ट इन दैट बॉक्स, दे सडनली कम आउट फॉर आवर किड्स. क्रिसमस आ गया ना बच्चों के लिए, जो चीजें वो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, दे आर केप्ट इन दैट ओल्ड बॉक्स. फ्रेश और एंटरटेनिंग हो सकता है जैसे आपके लिए हो सकता है. सो यू डोंट इवन हैव टू गो एंड बाय थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड, नॉट दैट वी कैन इन दिस लॉकडाउन. पर ये छोटी छोटी चीजों के साथ हम अपने लिए फ्रेश एनर्जी, फ्रेश स्पेस भी क्रिएट कर सकते हैं. एंड एट द सेम टाइम वी कैन फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ री एंगेजिंग आवर चिल्ड्रन. और उनके लिए जो चीजें हम शायद बाहर से नहीं ला पा रहे हैं, इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू गो आउट एंड बाय समथिंग फॉर योर किड. यू कैन ऑलवेज विद दीज लिटिल लिटिल एक्सपेरिमेंट, इन छोटी छोटी चीजों से वही चीज जो हमारी घर में है, हम उसी का फिर से इस्तेमाल करके वी कैन रीयूज एंड रीसाइकल इट. सो स्पेस, सबसे पहले क्रिएट दैट स्पेस इन योर हाउस एंड इन योर लाइव्स. अब जब हम बात करते हैं स्पेस इन आवर लाइव्स फॉर आवर लव्ड वंस, फॉर आवर रिलेशनशिप्स इन आवर हाउस, इन लॉज के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, तो अक्सर शायद हम रियलाइज करेंगे हमारा सारा टाइम चीजें में करने में लग जाता है. देयर इज नो वन टाइम वेयर वी आर एक्चुअली इंगेजिंग, कनेक्टिंग. वो एक ढांचा, एक स्पेस रहती ही नहीं है ज़्यादातर जहाँ हम एक दूसरे के साथ सच में बैठ के टाइम स्पेंड कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, सबसे ज़्यादा हम सुन पा रहे हैं. So I think in this time where there is so much chaos और इतना crisis है हमारे आसपास, why not make most of this time and create a space with our loved ones. ऐसी जगह बनाइए जहाँ हम सब मिलके बैठ सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, एक साथ जो हमने टाइम स्पेंड करना हमेशा से चाहा है. हमने चाहा है हमारे बच्चे हमारे दादा दादी के साथ, हम उनके साथ मिलजुल के बात सके, बात कर सके. क्रिएट दैट स्पेस टुडे. जब हम स्पेस की बात करते हैं, इसी से कनेक्टेड जो हमारा सेकंड वे है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंस. प्रेजेंस मतलब एक दूसरे के लिए होना. प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब किसी भी सिचुएशन में उस दौरान उधर प्रेजेंट होना, उधर होना, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो फिजिकली हो, बॉडीली हो, या फिर एक दूसरे के लिए होना हो. तो अक्सर हमने देखा है कि हमारा मोस्ट ऑफ द डे कैसे जाता है, इवन व्हेन वी आर लॉक डाउन एट होम. या तो हम अपने काम कर रहे होते हैं, कोई अपना ऑफिस का काम कर रहा होता है, कोई अपना घर का काम कर रहा होता है, कोई शायद जस्ट रैंडमली बैठा हुआ है, घर को क्लीन कर रहा है, या व्हाट्सएप पे है, फ़ोन पे है. कहीं ना कहीं हम सब एक साथ भी हैं, लेकिन फिर भी वी आर नॉट कनेक्टेड. हम एक दूसरे के साथ प्रेजेंट नहीं हैं. वो स्पेस नहीं है हम लोगों के लिए जहाँ हम एक दूसरे के लिए हैं, एक दूसरे के साथ हैं, साथ होकर भी साथ नहीं. So the second way of turning this difficult time into a retreat is to create present spaces with each other.
क्या मतलब है इस प्रेजेंट स्पेसेस का? तो मान लीजिए छोटी सी बात है, जैसे आप अपने लिए भी कुछ समय निकालना चाहेंगे, आप अपने काम भी करना चाहेंगे, आप अपने घर वालों के साथ भी बैठना चाहेंगे, लेकिन अक्सर ज़्यादातर हमको लगता है इतना लोड चीज़ों का, एक के बाद चीज़ें होती जा रही हैं कि हमें समझ ही नहीं आता हम वो उस टाइम कैसे निकाल सके, उस टाइम को कैसे बांट सके। तो इसी को लेकर चलते हैं हम आगे, प्रेजेंट होना। मान लीजिए आप अपने बच्चे के साथ खाना खा रहे हैं या अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहे हैं या मिलजुल के ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो उस समय, ऐसा समय जब सब लोग साथ हैं, तब आप अपने फोन्स, लैपटॉप या ऐसा कोई भी चीज जो उस समय एक आरंगी बन सकता है उस प्रेजेंट टाइम में और एक दूसरे को मिलजुलने के साथ नहीं है, आप उसको हटा दीजिए. Try this out, that on those limited spaces where you're together, say it's breakfast time, dinner time, lunch time with your family, or it's television time, or it's time where the family is together, जस्ट स्टे प्रेजेंट. आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट कीजिए, बातचीत कीजिए और उस समय किसी और चीज को आने मत दीजिए at that point in time, and you will really realize that even if there are those 10 minutes or 15 minutes of time spent, you are actually present. आप एक दूसरे को सुन रहे हैं. Think about it. No external distractions, no phone. Especially phone has really entered our spaces and taken away that presentness with each other. तो सबसे पहले उस चीज को हटाइए and really try to connect. सुनने की कोशिश करिए एक दूसरे को and really hear about each other, talk to each other and create those special moments of being together. Similarly, our kids, हमारे बच्चे अगर हम साथ 24/7 भी हों, they will most likely complain, मम्मा आप तो मेरे साथ टाइम ही नहीं स्पेंड करते, you are not here with me. And it's funny because haven't we spent all the time with them? फिर भी हमारा बच्चा कैसे कंप्लेंट कर रहा है that we are not present with them? Think about it. This is the time to pause. So अपने डे को स्कैन, अपने रूटीन को जस्ट स्कैन इट आउट एंड सी इवन व्हेन यू आर स्पेंडिंग टाइम विद योर चाइल्ड, हाउ मच आर यू विद योर चाइल्ड. आप बच्चे के साथ कितना है. अगर बच्चा खेल रहा है और आप साइड में व्हाट्सएप या फोन या कुछ भी ऐसी चीज जो आपकी अटेंशन एंगेज करे लेकिन आपके बच्चे के साथ वो अटेंशन नहीं है, तो बच्चे के लिए तो वो टाइम, चाहे आप वहाँ पे हैं भी, फिर भी आप उसके साथ प्रेजेंट नहीं है. सो दीज लिटिल चेंजेस इन आवर लाइफ, जहाँ की अगर हम अपने बच्चे के साथ हैं, हम पूरे तरीके से अपने बच्चे के साथ हैं. एंड और ऐसा कुछ भी हो जो हमारा टाइम हमारी टाइम और अटेंशन को खींच रहा है अपनी तरफ, हम उसको छोड़ के अपना सारा ध्यान और टाइम अपने बच्चे के साथ स्पेंड कर सके. सो फॉर एग्जाम्पल, ऐसे कौन से मोमेंट्स है दैट यू आर रियली जस्ट स्पेंडिंग 1-to-1 with our kids? Bathing time, feeding time, storytelling time, sleeping time. In all those times, it's a wonderful opportunity to connect with your child. अपने बच्चे के साथ बातचीत करिए, spend time with him and find that connect, that space जो बच्चे को बार बार खलता है कहीं ना कहीं कि मम्मी पापा है तो सही लेकिन वो फिर भी प्रेजेंट नहीं है. तो जो आप पे कांस्टेंट लोड रहता है, इवन ऑफ योर चाइल्ड कॉन्स्टेंटली वांटिंग योर अटेंशन, हर वक्त मम्मी मम्मी कांस्टेंट अटेंशन, अगर वो आधा घंटा, 1 घंटा या चाहे 15 मिनट भी दिन में आपने पूरी तरह अपने सारे अटेंशन और टाइम के साथ अपने बच्चे के साथ स्पेंड करा, बिलीव मी, ट्राई इट आउट. द नीड फॉर योर चाइल्ड, फॉर योर अटेंशन, क्लिंगिंग टू यू, बार बार सिर्फ मम्मी 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 या पापा 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 विल रियली गो डाउन. बिकॉज एट दैट पॉइंट इन टाइम जो बच्चे की नीड थी, विच वाज ऑल योर attention in every form, be it physical form, mental form, in every way, वो चीज उसको मिल चुकी है. So then the child also starts becoming independent and वो अपने तरीके से अपना भी रूटीन क्रिएट करने की कोशिश करता है, टाइम स्पेंड करने की कोशिश करता है away from the parent, when he knows that उसका parent यहीं पे है. He is given that secure foundation to their relationship through the time spent. Whatever time spend, let that be meaningful, let that be accountable, accounting for your child. उसको याद रहे in space with your family members and with your kids, and be it your kids or your other family members,
whenever you start being more present, you will realize that need जो constantly लोग आपको पुकारते रहते हैं, और they just keep saying you don't have time, be it with your friends, be it with anybody else in your life, and you give that 100% time, believe me, हाँ, हम सबके अंदर that we're all social beings, we crave for attention, we crave for that social time. So the moment you're able to fulfill that, you will realize they are dependent but not 100%. Interdependence is created. जहाँ उनको पता है, even your kids know you're there, but they don't need you all the time, 24/7. जो load रहता है ना, and that also makes us anxious as parents. That what should I do? How should, लगता है ना हम सबको अपने बच्चे को अब कैसे engage करें, अब वो इससे बोर हो गया, अब क्या करें. But the moment you start creating these present spaces, you will realize that the child also starts taking his own detours. अपना रास्ता वो खुद ही बनाने लगता है कि मम्मी के साथ वो टाइम है, फुलफिल हो गया, now let me do something by myself. They're all growing up children and they all want to make their own discoveries, yet they want to do them with your time. So you give them that time, give them that present space, and definitely they will start creating their own journeys. So now, after coming the second, here comes the third way. So the third way is it's called flow. Flow. जैसे एक नदी बहती है, एक फ्लो में बहती है, सिमिलरली हमारा डे, अगर हम उसको सिर्फ उन 24 आवर्स, उन 24 घंटों को एक फ्लो चाहते हैं हमारी लाइफ में, जो अभी कहीं ना कहीं इतना ज्यादा एनमेश्ड है कि ओवरलैपिंग है, हर चीज एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रही है. अभी खाना बनाना है, अभी बच्चे को टाइम देना है, अभी इन लॉज के साथ बैठना है, अभी मम्मा पापा से बात करनी है. सो इतना कुछ हमारे डे में है, एंड स्पेशली दैट एवरीवनस होम, all those things are going on consistently, एक के बाद एक के बाद एक. And then when we go back to sleep or when it is our rest time, we're so exhausted, हम इतने थक जाते हैं कि हमको उस टाइम जो 1 घंटे की शायद नींद भी हमें पूरी तरीके से नहीं आती, which is why, because there's so much on our head. चाहे चीजें कर ली हमने दिन में, लेकिन वो हमारे दिमाग में इतना सब कुछ चलता रहता है, because we keep preparing ourselves for the next day. अब कैसे करेंगे, अब क्या करेंगे, कल किस तरीके से डे, कल how will I create a routine, जिस तरीके से मैं कुछ अपने लिए टाइम निकाल सकूं. अक्सर आई थिंक मोस्ट women and a lot of mothers, we complain of a lack of time for us, because हमें लगता है all our time is either we spend with our kids or with families, and we feel so exhausted कि मैंने सब कुछ तो दे दिया, फिर भी why people are not satisfied, why I don't have time for myself. So how to break that? Let's create a flow into our lives. ऐसे सोचिए, अगर एक ग्लास जार है हमारे पास और उसको हमको भरना है. To fill in that glass jar, we have to put pebbles in it. How will we start to actually fill in that glass jar? किस तरीके से हम करेंगे? So, if we really want to do it properly, probably we'll start with the bigger rocks, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ताकि उसको इस तरीके से ढांचा बना सके कि बड़े से छोटे, ताकि ऊपर तक वो अच्छे से fill in हो सके. Similarly, हमारी लाइफ में ऐसे 3 big pebbles कौन से हैं मेरी लाइफ के, which are really really important and are very very quintessential in my life. उनके बिना my life चल रही है, but कोई फ्लो नहीं है, उसमें चले जा रही है एक एनमेश तरीके से, एक कभी भी कुछ भी हो रहा है. सो नाउ इज द टाइम, थिंक ऑफ दोस 3 big pebbles in your life, 3 big rocks for yourself. Maybe it could be beginning from myself, maybe like a sleep time, a family time, a cooking time, anything. कोई भी दिन की 3 वो सबसे इम्पोर्टेंट चीजें जो आप जरूर चाहोगे वो जरूर हो, और एक पर्टिकुलर टाइम पे. सो वो 3 चीजें ऐसी नॉन नेगोशिएबल हो जाती है. वंस यू सेट दैट रूटीन इन योर लाइफ, वो 3 चीजों का आप टाइम निकाल ले अपने पूरे दिन में. 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिग रॉक्स. So once you take out time for themselves and you really put down in your daily life कि ये 3 चीजें इस वक्त ही होंगी, चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए, पर वो 3 चीजें उसी टाइम पे होंगी. सो उससे क्या होगा, इतने chaos में आपको भी प्रिडिक्टेबिलिटी मिलेगी अपने डे में,
And for everybody around you, they also know, say it's 8 o'clock and it's time for breakfast. So everybody in the house really comes down to having breakfast or something. You create a routine for yourself. I know it'll be little difficult initially, क्योंकि हम सब अभी अपने घर के राजा हैं, हम सब अपने रूटीन बनाते हैं, सब अपने तरीके से चलते हैं. And that's why most probably the women at home, the mothers, they are at the receiving end, because everybody is in their own, I don't know, own अपनी धुन में है सब. So you be the one who is the one as a reflector for everybody else, as a family also. If everybody in their life creates those 3 big rocks, they are non-negotiable. उस time वो negotiate नहीं हो सकते किसी भी और चीज से. तो उससे क्या होता है, हम एक predictability create करने लगते हैं अपने आसपास. और इससे सिर्फ हमको बेनिफिट नहीं होता, बिकॉज मुझे पता है ये 3 चीजें तो आज मुझे करनी ही है और इसी टाइम पे करनी है. तो फिर मैं आई ऑल्सो स्टार्ट वीविंग माई लाइफ, माई एक्टिविटीज, एवरीथिंग अराउंड इट, कि इस टाइम पे ये 3 चीजें बनी. और इससे क्या होता है, जो हमारे आसपास लोग हैं उनको भी समझ आने लगता है, वो भी धीरे धीरे इस हैबिट में आने लगते हैं कि इस टाइम यही होगा घर में. एंड वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि इतना क्राइसिस है, इतना केओस है, इतने हम सब एक साथ जुट के घर में आ गए हैं. तो ये छोटी छोटी चीजें एक प्रिडिक्टेबिलिटी, एक फ्लो ला सकते हैं हमारी लाइफ में, जो अदरवाइज किसी भी डायरेक्शन में चल रहा है, वो दैट रिवर इज फ्लोइंग इन एनी डायरेक्शन. बट विद these small practices, इन 3 big rocks के साथ we can actually create a proper flow for our river to go about. Similarly, as mothers, you can set an example for your children. हमारे बच्चों के लिए, let's say 7 big rocks. What can that be? Say family time, sleeping time, quiet time, play time. So as we create these big 7 rocks, the children also start falling into a natural rhythm. वो अपने आप ही एडजस्ट करने लगते हैं इन चीज़ों से, एंड दे स्टार्ट मेकिंग अ रूटीन फॉर देमसेल्व्स. शायद शुरू में आपको बच्चों को हेल्प करना पड़े, असिस्ट करना पड़े, लेकिन धीरे धीरे व्हेन वी कीप फॉलोइंग दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस, द किड्स ऑल्सो स्टार्ट लर्निंग कि हाँ, ये एक जीने का एक तरीका है. बच्चे कैसे सीखते हैं चीज़ें, दे लुक एट देयर पेरेंट्स, दे लुक इन द एनवायरनमेंट, और उन्हीं सब चीज़ों से वो भी स्कीमाज, आइडियाज़, कॉन्सेप्ट्स पिक करने लगते हैं. तो अगर हम अपनी लाइफ में वो चीज़ अपने बच्चों को सिखा सके, वो एमिनेट कर सके, those big rocks, so when the kid also grows up, he also grows with that ideology and learning, and they start becoming independent. The best part is our kids will start becoming independent, and not like हमको उनको बहुत फोर्स करना है, बहुत ज़्यादा परेशान करना है. बच्चों के साथ बैठिए, उनसे पूछिए कि कौन सा टाइम उनको कार्टून टाइम करना है, टीवी टाइम करना है, उनको कौन सा टाइम स्टोरी बुक टाइम करना है, when do they want mama to sit with them. And when you include the child, उसको भी लगता है that I am important, I am somebody who was questioned, who was addressed, my parents want to know from me, rather than the parents directing it to their child. So वो हम क्या करें, we're just flipping the direction, with the child equally feeling involved and engaged with the household processes and the daily life. तो बच्चे को भी recognize लगता है, उसको भी लगता है that he was heard. So create this flow in your life. First, start with yourself. Think about your 3 big rocks, which are non-negotiable. Put them down, list them down. You can also create a chart for your child, a star chart. तो जब जब मैं खुद वो रूटीन, वो 3 चीजें, 3 big rocks follow करती हूँ, I get a star. Let your child give you a star. And similarly, as and how the kid also follows his 7 big stones or his 7 big agendas in his life, you keep giving him that star on a daily basis. Believe me, it really बहुत help करता है, and it brings a lot of predictability in an otherwise chaotic space. So next one, after the flow, we come to let's see, are you guys interested? Yes, experience. So experiences, we've all had different experience मतलब एक circumstance, ऐसी चीज जो हमारे सामने गुजरती हुई हमने देखी है हमारी लाइफ में. Now in this time of extreme crisis outside,
कहीं ना कहीं हम सब में ऐसी बहुत सी एंजाइटीज है, बहुत से इमोशंस हैं जो अंदर ही अंदर चल रहे हैं और शायद हम भी उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे एज अडल्ट्स. सो थिंक अबाउट हमारे बच्चे किन क्या क्या फील कर रहे होंगे और शायद वो बता भी नहीं पा रहे होंगे. सो मच दैट मस्ट बी गोइंग ऑन विद इन देम. और जब वो घर में हैं और वो देखते हैं कि मम्मी पापा भी बिजी हैं अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं दादू दादी कहीं हैं, और वी आर ऑल देयर जैसे हमने बात करी, लेकिन हम कनेक्टेड नहीं हैं. एंड लाइक वी स्पोक अबाउट क्रिएटिंग प्रेजेंट माइंडफुल स्पेसेस, एक्सपीरियंस भी उसी का एक बाय प्रोडक्ट है कि जब हम घर में हैं ऑलवेज रिमेन इन आवर हार्ट्स. हम याद रखेंगे कि हमने ऐसे एक्सपीरियंसेस, छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस अपने लिए बनाए जो हमारे लिए एक दूसरे को हेल्प करा कनेक्ट करने के लिए. सो फॉर एग्जाम्पल, आजकल हम सबके पास टाइम है, अक्सर डेली लाइफ से थोड़ा ज़्यादा टाइम है शायद. सो उस टाइम को बेस्ट कैसे यूटिलाइज करें ऐसे पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस क्रिएट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, an experience in the house when everybody is collected together and they are say doing a story time. से हमने एक बॉल ली और उसको पास करा मम्मी से, पापा ने दीदी को दिया, दीदी ने भैया को, ग्रैंड पेरेंट्स को. सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एक्चुअली प्लेइंग दैट पास इन द पास गेम, but in that process we sharing our little stories. It could be story of the day, it could be story of the month, of the week, कि हमने ऐसा क्या एक्सपीरियंस करा, हमने क्या क्या फील करा, हमने क्या क्या नई चीजें करी. तो वो एक छोटा सा स्टोरी टाइम के थ्रू वी कैन क्रिएट सच एन इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस फॉर आवरसेल्व्स, आवर फैमिली, आवर किड्स, जिससे हमें एक स्पेस भी मिल रही है टू वेंट आउट एंड ऑल्सो इन अ फन वे, इन अ वेरी वेरी नॉन थ्रेटनिंग वे, जो एक डायरेक्ट तरीका नहीं है अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने का, बट जस्ट थ्रू अ लिटिल स्टोरी जो शायद किसी और के बारे में भी हो सकती है. मान लो वी क्रिएट अ फिक्शनल इमेजिनरी character and we are telling a story about him or her. If sharing our stories initially can be very very overwhelming, so start with the character, and believe me, when our kids start telling stories, they start telling the most deepest emotions of their hearts. So through these little experiences हम ऐसी warm space से space create कर रहे हैं, ऐसे safe experiences create कर रहे हैं जहाँ the child is also able to share, we are able to vent out an experience, and this collective feeling of connect जो we all want with each other, लेकिन कहीं ना कहीं शायद हमारी रेगुलर जिंदगी में वो हम खोते जा रहे हैं. So now is the time of creating those experiences together. It could be anything else. It could just be a Bollywood night where either we are watching a Bollywood movie जो हम सब की favorite है, या फिर we are creating a Bollywood dance space. When was the last time we actually frivolously dance? हमने सब कुछ भूल के बहुत मजे से एक साथ डांस करा होगा, enjoy करा होगा. So now's the time when we create those little experiences. It could be a cooking day that everybody, हम सब एक रेसिपी डिसाइड करते हैं म्यूचुअली एक दूसरे से डिस्कस करके. डिस्कस विद योर चाइल्ड व्हाट ही रियली वांट्स, और एज अ फैमिली वी कैन डिस्कस दैट ऐसी क्या चीजें हैं जो आज हम खाना चाहते हैं, एंड हर कोई छोटा छोटा अपना लिटिल एफर्ट डाल के उस चीज को बना सकता है. एंड दैट फील्स सो गुड दैट ऑल ऑफ अस हैव कलेक्टिवली टुगेदर, सबने इक्वल पार्ट डाल के एक चीज बनाई. दैट एक्साइटमेंट that our kids feel specially, it's worth it. Believe me, it's really worth it. And this experience we could also use to recollect our family values as a unit. Hum as a family kaun hai? Let's sit and reflect about it. Also share with our children. This is the most beautiful time where our elders are here, we are here. Create this time for our elders to share their stories, their experiences of life, which we want our kids to learn, but we otherwise had no time to share about it. दादू दादी से सुनिए उनकी कहानियाँ, अपनी कहानियाँ शेयर करिए. शेयर द फर्स्ट टाइम एज पार्टनर्स आप लोग कैसे मिले, हाउ डिड योर चाइल्ड कम इनटू दिस लाइफ, एंड इन दिस प्रोसेस सो मेनी ऑफ द क्यूरियोसिटीज ऑफ द चाइल्ड गेट एड्रेस्ड विद दीज लिटिल एक्सपीरियंसेस. So go and create these experiences soon. Coming on to the next. और इससे क्या तरीका है? Play time. The most important as parents when you talk about play time,
अक्सर हमने देखा है कि अब जैसे सारे बच्चे घर पे हैं, नाउ they're usually getting bored, and we've also spoken about it. So one way is, again, put back all their toys, and then suddenly one day when they're really, really bored, just come up with it again and give it to them. They won't even remember how their old toys was, and genuinely वो कुछ ना कुछ नया discover जरूर करेंगे. Another way where you can make this time very, very meaningful through play with your child is, जो भी बच्चे के toys है, when the child is asleep or he or she is busy somewhere, just arrange them in, say, अगर बच्चे की बाबीज हैं, arrange it in a manner कि सारी dolls are created very nicely, kept very nicely. एक basically एक stage create करें जहां हम बच्चे के toys एक certain तरीके से रख सके, जैसे कि जब बच्चा आए उस रूम में, he is really really excited that wow, it's a big surprise for him also. जहां उसके टॉयज एक कॉर्नर में पड़े थे या कहीं ना कहीं दबे हुए पड़े थे, just put them out on a platter, on a stage for the child. Believe me, they will love it, and that will be the perfect ground for them to experiment and then build on to that space you've created very, very independently. All you got to do is just create that stage for your child. आप वो उसके टॉय से, प्ले मटेरियल से, घर में कोई ओल्ड चीज़ें हैं, कोई टॉयज हैं, कोई कपड़े हैं, जस्ट क्रिएट द बेस्ट आउट ऑफ द वेस्ट जो पुराने से जंक्ड बॉक्स में हमारे पड़े हैं, और जस्ट थ्रू लाइक basic spoons, glasses, just keep them all there and let your child discover. इस अप्रोच को रेशियो मीडिया कहा जाता है. इट्स अ वेरी वेरी वेल डिफाइंड अप्रोच ऑफ लर्निंग विद किड्स, जहाँ पे एक फ्लो टाइम बनाया जाता है और बच्चे की जितनी भी चीज़ें हैं वो एक स्टेज की तरह वहाँ पे रखी जाती है, एंड देन यू जस्ट लीव इट टू द चाइल्ड for him or her to independently explore, and believe me, the kids love it. जब उनके सामने सारी चीजें, I'm sure you all as mothers know it, just keep it all ready for your child and then you leave them with it, let them create something very, very new, and while they do so, you can clearly go and do some of your very, very important works for that day. So you can use play very, very meaningfully in this way for your child. उनके लिए एक stage ready रखिए, put it out for them, out there for them to make whatever they have to. In addition, play can also be used in a lot of ways. Like we could do a lot of do-it-yourself, khud se kare hue craft. You can show them some videos, and then again leave them with the resources: sketch pen, glue stick, or craft material. जो भी कुछ घर में है या कोई पुरानी चीज है घर में, give it to your child. Let them take the lead, please. Let them create something completely out of their imagination, and you will realize you start getting time to do your own things the moment you allow your child to take the lead. But yes, do ensure if your kids are really really young that they are in close proximity and you're looking up, dekh rahe hain wo kya kar rahe hain, so that it's done in a safe manner. Now, next one. Right, so the next one is एनर्जी. इस टाइम में तो हमको बहुत एनर्जी चाहिए, है ना. मोस्ट ऑफ आवर किड्स टेक अवे ऑल आवर एनर्जी एंड टाइम एंड आवर फैमिली मेंबर्स. सो एनर्जी का मतलब है सेल्फ केयर. अपने लिए जब तक आप में एनर्जी नहीं होगी, आप घर के किसी भी फैमिली मेंबर को नहीं दे सकते. एंड बिलीव मी, एनर्जी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वाइटल इंग्रेडिएंट जो हमें चाहिए हमारी इस सीरीज में to convert this difficult family time into a retreat. So क्या है ये एनर्जी? एक ऐसा पिल है of self care that we mothers especially really compromise on, because we put ourselves on the back burner and we always give our child, our family, that first preference. पर एक बात बताइए, क्या आप किसी खाली कप से pour कर सकते हैं? Can you pour from an empty cup? So in order to brighten the lives of your loved ones and to make this difficult time really, really meaningful for them, start with your own self. Like we said, your 3 big stones. At the same time, self-care is extremely, extremely important. तो है क्या ये self-care? Self-care कुछ भी हो सकता है, ऐसी चीज़ जो हमें relax कर सके. It could be as simple as having a warm shower for yourself. कुछ ऐसा खाने को बनाना, cooking something which you really, really love. Or just putting that nail paint out there you've been wanting to do forever. Or just getting up and dressing yourself in the day, and not just
helping yourself feel like, कि मैं तो ऐसे ही हूँ, अपना डे स्टार्ट करूँ, पहले बच्चों को इन सब चीज़ों को एड्रेस करूँ, अपने आप को नहीं भूलना. गिव योर टाइम, ड्रेस योर सेल्फ, फील पॉजिटिव एंड स्टार्ट डूइंग द रेस्ट ऑफ द चोर्स. बिलीव मी, you will feel more positive to do anything and everything that is in your day and routine. So self-care could be anything. Now mothers ask me, बच्चे सर पे हैं, मेड नहीं है, घर में इतना काम है और आप सेल्फ केयर की बात कर रहे हो. How will I take care of myself when there's so much else to be taken care of? But I ask all of you, जब आप WhatsApp पे टाइम स्पेंड करते हैं, when you're able to see a video or do anything and everything which is beyond your list of chores, aren't you spending that time? So isn't it worth, really, really worth to spend that time on yourself? Also, you're doing so hard. आप इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं सबको प्रोवाइड करने के लिए. But if you don't provide for your own self, I think then half of the battle is lost. So really, really take out that time for yourself. Self-care is very important. ऐसी कोई भी चीज़ which will give you a sense of happiness, so that when you go off to sleep, you don't feel like your day was just gone taking care of everyone else. सिर्फ लोगों को, मेरे घर के लोगों को, या सिर्फ चीज़ों में मेरा टाइम नहीं गया. I go home, I go back home to my room, to my space, relaxed and not just worked up, not just pressurized by things. So please take that time out. It could be as small as just making a warm tea of cup and spending those 5 minutes in silence. Figure out your ways, and we at BabyChakra would really look forward. I would really look forward to know your self-care ways, self-care tips as mommies. I would really love to know, and let's create this immense energy all around us. ऐसी positive energy जो अपने से हम दूसरों को extend कर सकते हैं. And last but not the least is, so I will share with you, it is that very strong promise of family bliss. Family bliss matlab happiness, bliss matlab khushi. So when we talk about family bliss, family happiness, it can only stem and come when I promise myself first the rest of the 6 things, and the 7th one, to not compare myself, to become a creator and not a consumer. हम आसपास different mothers को, लोगों को, social media में, हर जगह we keep seeing लोग different तरीके चीज़ें अपना रहे हैं, and somewhere down the line we feel really small. हम अपने आप को छोटा feel करते हैं कि मैं क्यों वो चीज़ नहीं कर पा रही, चाहे मेरा जितना भी मन हो. Why am I not able to do that for my family? और हम कहीं ना कहीं अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं लोगों से, अपने फ्रेंड्स से, साइड वाली मम्मी से, नेबर्स से, and sometimes even our grandparents, in-laws. Everybody has that piece of advice to give. But who knows what works for your family? Only you know, as a mother, as a woman of the house, as a family member who lives with them. जो आपके रिसोर्सेज हैं और आपकी सिचुएशन है, जो आपके चैलेंजेस हैं, जो आपके पॉजिटिव्स हैं, वो हर एक फैमिली के सेम नहीं हो सकते. सो द नेक्स्ट टाइम यू फील रियली स्मॉल अबाउट योर सेल्फ, या यू फील कि कितना भी कर लूँ मैं, आई एम नॉट एबल टू क्रिएट दैट रिट्रीट, दैट फीलिंग ऑफ being this family time and it being a very beautiful time. हमारा सारा ध्यान तो आधा कहीं ना कहीं उस कंपैरिजन, उस थॉट्स के साथ वो रह जाता है ना. जो चीज़ें हम देखते हैं, सुनते हैं, वो सिर्फ हमारे देख के चली नहीं जाती, हमारे माइंड में रह जाती है. सो द मोमेंट यू स्टार्ट seeing those thoughts come back to you, that आज आप तुमने ये नहीं करा, आप ये करना चाहती थी, look at your friend, she's doing so much, she's engaging her child in so many different ways. You know the ingredients too, we just discussed today, but do them based on your pace, अपनी pace के हिसाब से, अपने family के resources और dynamics के हिसाब से, जो आपके लिए best work करता है. Do what works best for you, and that will create true family happiness. जो आपकी फैमिली को एक साथ बॉन्ड करता है, जो आपकी फैमिली के एक्सपीरियंसेस हैं, जो आपकी फैमिली के वैल्यूज हैं. Stick to them and create that own space for yourself. Don't let anyone else come and question you.
Be the creator. You are, आप में पूरी strength है. You know the mantras. You know exactly what is to be done. So believe in yourself and believe you can create this time, which is a difficult time, into a beautiful, blissful, happy, retreatful time. Thank you so much for hearing me out. Now I'll take up any questions that you beautiful women or whoever's watching us, mothers, family members, dads have for me. So I'll take them one by one. If you have any questions, you can please ask them and I'll be happy to answer. Okay, are there any? I'm waiting for any kind of questions or any suggestions or any queries you have. So Mr. Narendra Hariwal said hi. Priyanka says hello, doctor. Big hi. Anybody else with any more questions? I'm waiting for them. Or yeah, you want to discuss anything? All right. So let's look at this. I hope that it's been a little meaningful session for all of you to understand simple ways and techniques in which we could make this little difficult time that all of us are facing. Don't forget, we're all in this together. Do not forget, हम सब इस journey में एक साथ हैं. And at any point in time there is any difficulty, we're all together and we've learned the 7 simple ways in which we could create this difficult time into a more meaningful time, a time of creating this family bliss and retreat and happiness. So ये छोटी छोटी चीजें try करिए and definitely let me know how it goes for you. You can also reach out to me at my email ID, which is ahujaishani@gmail.com, and I will be happy to address any questions, any queries. आप कोई भी parenting related issue, family related issue, किस तरीके से हम spaces create कर सकते हैं, I will really look forward to it. And thank you so much. So here's me saying bye-bye, and I hope you all had a good time. Bye, namaste, and take care.